All right, so you probably don't realize that right now you're actually looking at something quite rare, because I am a millennial computer scientist, book author, standing on a TED stage, and yet I've never had a social media account. How this happened was actually somewhat random. Social media first came onto my radar when I was at college, my sophomore year of college. This is when Facebook arrived at our campus. And at the time, which was right after the first .com bust, I had had a dorm room business. I had had to shut it down in the bust. And then suddenly this other kid from Harvard named Mark had this product called Facebook, and people were getting excited about it. So it's sort of a fit of somewhat immature professional jealousy. I said, I'm not going to use this thing. I'm not going to help this kid's business. What's that ever going to amount to? So anyways, I go along my life. I look up not long later, and I see that everyone I know is really hooked on this thing. And from the clarity you can get when you have some objectivity, some perspective on it, I realized this seems a little bit dangerous, so I never signed up. I've never had a social media account since. So I'm here for two reasons. I want to deliver two messages. The first message I want to deliver is that even though I've never had a social media account, I'm okay. You don't have to worry. It turns out I still have friends. I still know what's going on in the world. As a computer scientist, I still collaborate with people all around the world. I'm still regularly exposed serendipitously to interesting ideas, and I rarely describe myself as lacking in entertainment options. So I've been okay, but I'd go even farther. I'd go even farther and say not only am I okay without social media, but I think I'm actually better off. I think I'm happier. I think I find more sustainability in my life, and I think I've been more successful professionally because I don't use social media. So my second goal here on stage is to try to convince more of you to believe the same thing. To see if I could actually convince more of you that you too would be better off if you quit social media. So if the theme of this TEDx event is future tense, I guess in other words, this would be my vision of the future, would be one in which fewer people actually use social media. Okay, so that's a big claim. I think I need to back it up some. I thought what I would do is take the three most common objections I hear when I suggest to people that they quit social media. And then for each of these objections, I'll try to defuse the hype and see if I can actually push in some more reality. So this is the first most common objection I hear. That's not a hermit. That's actually a hipster web developer down from 8th Street. I'm not sure. Hipster or hermit, sometimes it's hard to tell. So this first objection goes as follows. Cal, social media is one of the fundamental technologies of the 21st century. To reject social media would be an act of extreme Luddism. It would be like riding to work in a horse or using a rotary phone. I can't take such a big stance in my life. So my reaction to that objection is, I think that is nonsense. Social media is not a fundamental technology. It leverages some fundamental technologies, but it's better understood as this, which is to say it's a source of entertainment. It's an entertainment product. The way the technologist Jaron Lanier puts it is that these companies offer you shiny treats in exchange for minutes of your attention and bytes of your personal data, which can then be packaged up and sold. So to say that you don't use social media should not be a large social stance. It's just rejecting one form of entertainment for others. It should be no more controversial than saying, I don't like newspapers, I like to get my news from magazines. Or I prefer to watch cable series as opposed to network television series. It's not a major political or social stance to say you don't use this product. My use of the slot machine image up here also is not accidental, because if you look a little bit closer at these technologies, it's not just that they're a source of entertainment, but they're actually a somewhat unsavory source of entertainment. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. That is the desired use case of these products, is that you use it in an addictive fashion because that maximizes the profit that can be extracted from your attention and data. So it's not a fundamental technology, it's just a source of entertainment, one among many, and it's somewhat unsavory if you look a little bit closer. So here's the second common objection I hear when I suggest that people quit social media. The objection goes as follows. Cal, I can't quit social media because it is vital to my success in the 21st century economy. If I do not have a well-cultivated social media brand, people won't know who I am, people won't be able to find me, opportunities won't come my way, and I will effectively disappear from the economy. So again, my reaction is, once again, this objection.
also is nonsense. So I recently published this book that draws on multiple different strands of evidence to make the point that in a competitive 21st century economy, what the market values is the ability to produce things that are rare and are valuable. If you can produce something that's rare and is valuable, the market will value that. What the market dismisses, for the most part, are activities that are easy to replicate and produce a small amount of value. Well, social media use is the epitome of an easy to replicate activity that does not directly produce a lot of value. It's something that any 16-year-old with a smartphone can do. By definition, the market is not going to give a lot of value to those behaviors. It's instead going to reward the deep, concentrated work required to build real skills and to apply those skills to produce things like a craftsman that are rare and that are valuable. To put it another way, if you can write an elegant algorithm, if you can write a legal brief that can change a case, if you can write 1,000 words of prose that's going to fixate a reader right to the end, if you can look at a sea of ambiguous data and apply statistics and pull out insights that could transform a whole business strategy, if you can do these type of activities which require deep work that produce outcomes that are rare and valuable, people will find you. You will be able to write your own ticket. You will be able to build the foundation of a very meaningful and successful professional life, regardless of how many Instagram followers you have. So this is the third common objection I hear when I suggest to people that they quit social media. And in some sense, I think it might be one of the most important. So this objection goes as follows. Cal, maybe I agree with you. Maybe you're right. It's not a fundamental technology. Maybe using social media is not at the core of my professional success. But you know what? It's harmless. I have some fun on it. Weird Twitter is funny. I don't even really use it that much. I'm a first adopter. It's just kind of interesting to try it out. And maybe I might miss out on something if I don't use it. What's the harm? So again, I look back and I say, this objection also is nonsense. In this case, what it misses is what I think is a very important reality that we need to talk about more frankly, which is that social media brings with it multiple, well-documented, significant harms. And we actually have to confront these harms head-on when trying to make decisions about whether or not we embrace this technology and let it into our lives. So one of these harms that we know this technology brings has to do with your professional success. So I just argued before that the ability to focus intensely to produce things that are rare and valuable, to hone skills that the marketplace values, that this is what's going to matter in our economy. But right before that, I argued that social media tools are designed to be addictive. The actual desired use case of these tools is that you fragment your attention as much as possible throughout your waking hours. That's how these tools are designed to use. Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention to take a quick glance, to just check, and just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. In other words, you could permanently reduce your capacity to do exactly the type of deep effort that we're finding to be more and more necessary in an increasingly competitive economy. So social media use is not harmless. It can actually have a significant negative impact on your ability to thrive in the economy. I'm especially worried about this when we look at the younger generation coming up, which is the most saturated in this technology. If you lose your ability to sustain concentration, you're going to become less and less relevant to this economy. There's also psychological harms that are well documented social media brings that we do need to address. So we know from the research literature that the more you use social media, the more likely you are to feel lonely or isolated. We know that the constant exposure to your friends' carefully curated positive portrayals of their life can leave you to feel inadequate and can increase rates of depression. And something I think we're going to be hearing more about in the near future is that there's a fundamental mismatch between the way our brains are wired and this behavior of exposing yourself to stimuli with intermittent rewards throughout all of your waking hours. So it's one thing to spend a couple hours at the slot machine in Las Vegas, but if you bring a slot machine with you and you pull that handle all day long from when you wake up to when you go to bed, we're not wired from it. It short circuits the brain, and we're starting to find that it has actual cognitive consequences, one of them being the sort of pervasive background hum of anxiety. Now, the canary in the coal mine for this issue is actually college campuses.
If you talk to mental health experts on college campuses, they'll tell you, along with the rise of ubiquitous smartphone use and social media use among the students on the campus came an explosion of anxiety-related disorders on those campuses. So that's the canary in the coal mine. This type of behavior is a mismatch for our brain wiring and can make you feel miserable. So there's real cost to social media use, which means when you're trying to decide, should I use this or not, saying it's harmless is not enough. You actually have to identify a significantly positive, clear benefit that can outweigh these potential completely non-trivial harms. So people often ask, okay, but what is life like without social media? That can actually be a little bit scary to think about. What I found from people I know who've gone through this process, there can be a few weeks that are difficult. It actually is like a true detox process. The first 2 weeks can be uncomfortable. You feel a little bit anxious, you feel like you're missing a limb. But after that, things settle down, and actually life after social media can be quite positive. There's 2 things I can report back to you from the world of no social media use. First, it can be quite productive. So I'm a professor at a research institution. I've written 5 books. I rarely work past 5 p.m. on the weekdays. Part of the way I'm able to pull that off is because it turns out if you treat your attention with respect, so you don't fragment it, you allow it to stay whole, you preserve your ability to concentrate. When it comes time to work, you can actually do one thing after another and do it with intensity. And intensity can be traded for time. It's surprising how much you can get done in an 8-hour day if you're able to give each thing intense concentration after another. Something else I can report back from life without social media is that outside of work, things can be quite peaceful. So I often joke I'd be very comfortable being a 1930s farmer because if you look at my leisure time, I read newspaper while the sun comes up. I listen to baseball on the radio. I, honest to God, sit in a leather chair and read hardcover books at night after my kids go to bed. It sounds old-fashioned, but I'll tell you, they were onto something back then. It's actually a restorative, very peaceful way to actually spend your time out of work. You don't have the constant hum of stimuli and the background hum of anxiety that comes along with that. So life without social media is really not so bad. So we pull together these threads and you see my full argument for why I think not everyone, but certainly much more people than right now use social media. Much more people should not be using social media. And that's because we can first, to summarize, discard with the main concerns that somehow it's a fundamental technology you have to use. Nonsense. It's a slot machine in your phone. We can discard with this notion that you're not going to get a job if you don't use social media. Nonsense. Anything a 6-year-old with a smartphone can do is not going to be what the market rewards. And then I emphasize the point that there's real harms with it. So it's not just harmless. You really would have to have a significant benefit before you would actually say this trade-off is worth it. And finally, I noted that life without social media, there's real positives associated with it. So I'm hoping that when many of you actually go through this same calculus, you'll at least consider the perspective I'm making right now, which is many more people would be much better off if they didn't use this technology. Now, of course, some of you might disagree. Some of you might have scathing but accurate critiques of me and my points. And of course, I welcome all negative feedback. I just ask that you direct your comments towards Twitter. Thank you. कि जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन्स के द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी, तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार हो गए, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की बुक सीरीज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। वैसे तो कई सारे प्रोग्रामर्स और राइटर्स हो गए, लेकिन क्यों इन दोनों की ही चीजें पूरे वर्ल्ड में फेमस है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हैरी पॉटर की बुक सीरीज को बिल्ड करने में बिल गेट्स और जेके रोलिंग ने जिस टेक्निक को यूज किया था, उसका नाम है डीप वर्क। आज के टाइम में ये बहुत ही रेयर टेक्निक होगी जो लोग यूज करते होंगे। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये डीप वर्क है क्या? वर्क की बात करें तो वर्क मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक डीप वर्क और दूसरा सैलो वर्क। सैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए ऑफिस का कामकाज करना, एक्चुअल में बातचीत करते वक्त अपने मोबाइल पे लगे रहना, गाने सुनने के साथ साथ कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना। मतलब कि वो सभी काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो एक्चुअल में सैलो वर्क ही है। सैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना, ईमेल्स चेक करते रहना, मैसेजेस का रिप्लाई करना, ये सब सैलो वर्क ही है। मतलब कि ये सभी काम आप पूरी जिंदगी भर भी क्यों ना कर लो,
इस काम से आपके जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं होने वाली। जबकि दूसरी ओर है डीप वर्क, जो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल बट इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किया जाए। डीप वर्क में आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जो आपकी सोचने की कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रेप्लिकेट हो। मतलब कि आपकी वो स्किल कोई चुरा भी नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता। यानी कि डीप वर्क से आपका काम सबसे यूनिक और पावरफुल होगा। डीप वर्क के कुछ एग्जांपल बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर पे एक ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उनको बुलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को फोन बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रह के अपने लेक साइड कॉटेज में रीडिंग और नए आइडियाज पर सोचने का काम करते हैं। MIT के प्रोफेसर और अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट एलन लाइटमैन भी कुछ टाइम के लिए अपने छोटे से टापू पर चले जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल कुछ नहीं होता। आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्टेड होते हुए भी हो जाता है, तो हमें ये बिना डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हो वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन्स के द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार हो गए, ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से। मतलब कि आपका सेलो वर्क फ्यूचर में किसी ना किसी तरह ऑटोमेटेड हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझाता हूँ कि सेलो वर्क इतना बुरा क्यों है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रेसिड्यू। मानो आप 100% फोकस के साथ कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आने से आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग गए, पर जब आप वापस अपने काम पे आते हो तब वो 100% फोकस में से आपका 20 to 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और 70 to 80% फोकस ही आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 to 30% आपका अटेंशन रेसिड्यू था जो आपके पिछले काम में ही रह गया होता है और आपके काम में फिर से 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप कई सारी चीजें एक साथ करते हो, तब एक काम से दूसरे टास्क में स्विच करते वक्त आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है जिससे आप कभी भी पूरी तरह अपना 100% देके वर्क नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रेयर, वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों के पास गोल्ड फिश के अटेंशन स्पान से भी कम, यानी कि 8 सेकंड से भी कम अटेंशन स्पान होगा। और अगर उस टाइम पर आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती बाकी सब लोगों से ऊपर रेयर वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हो। ऑथर कहते हैं कि आने वाली टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सर्वाइव करके आगे बढ़ पाएंगे। एक, जिनके पास बहुत सारा फंड हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। दूसरे वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ के उनके साथ वर्क कर सके। और तीसरे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब ऑब्वियसली इस 3 में से जो अप्रोच सबके लिए बेस्ट सूटेबल है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। और आपके फील्ड में आप एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप में फुल कंसंट्रेशन के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी हो। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में डीप वर्क किया कैसे जाता है। काल न्यूपोर्ट ने हमें डीप वर्क करने की 4 टेक्निक्स बताई है जिसे आप अपनी नीड के मुताबिक चूज कर सकते हो। फर्स्ट है मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मोंक की तरह अपना सब कुछ छोड़ के बस कोई गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेटेड हो जाते हो। जैसे 1970s में बिल गेट्स ने लगातार 8 हफ्तों तक अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो कोडिंग आगे जाके $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बेस प्रोग्राम बना। अब ऑब्वियसली ऐसे सब कुछ छोड़ के एक मोंक की तरह अपने गोल पे वर्क करने के लिए चले जाना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सेकंड है बाइमोडल डीप वर्क। इसका मतलब कभी कभी मोनास्टिक अप्रोच से काम करना और बाकी टाइम पे नॉर्मल लाइफ जीना। ये अप्रोच उनके लिए है जो अपने आप को दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं रख सकते। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में अपने घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि वो कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और दूसरे कई सारे डिस्ट्रैक्शन से परेशान थी। इसीलिए उन्होंने इस बाइमोडल अप्रोच को अपनाया, यानी कि जब भी उनको अपनी बुक पर वर्क करना होता था तब वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाके लिखते थे और बाद में घर आके नॉर्मल लाइफ जीते थे। कुछ ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि अपने कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए 2 घंटे तक आउट ऑफ संपर्क हो जाओ और जब आपका वर्क पूरा हो तब फिर से लोगों के सामने आके नॉर्मल लाइफ जीने लगो। थर्ड है रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनाना। इसीलिए इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि आप हर रोज इस टाइम पर डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम पर सेलो वर्क चलेगा। एंड लास्ट है
जर्नलिस्टिक डीप वर्क। अगर आप पूरे दिन बहुत बिजी रहते हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इसमें एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा, तब आप डीप वर्क करें। जैसे अगर आपको पता चले कि आज आप 3 से 3.5 फ्री रहने वाले हो, तो उस टाइम पर अपना फोन बंद करके किसी आइसोलेट जगह पर जाके अपना वर्क कर लो। इस टेक्निक का यूज ऑथर भी करते हैं कि जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो उनके शेड्यूल के हिसाब से उस टाइम या उस दिन में डीप मोड में जाके काम करते हैं। मतलब फुली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल है पीटर सेंकमैन। जब पीटर को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी थी, तब उन्होंने थोड़ा हटके बट पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक करी, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और फ्लाइट में लगातार 30 घंटे फुल कंसंट्रेशन से वर्क करके उन्होंने वो स्क्रिप्ट पूरी कर ली। उनको वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर डीप वर्क करने के लिए थोड़ा खर्चा हुआ था, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहाँ प्रोड्यूस कर पाए, उनके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। तो ये सब लोगों के डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम ही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के काम करना। आप भी आपकी नीड के मुताबिक इन चारों में से किसी भी टेक्निक का यूज करके डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब इस बुक में से मैंने सीखी सभी बातों को समराइज करके बताऊं तो वर्क मेनली 2 टाइप के होते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क, जिसमें डीप वर्क बहुत ही वैल्यूएबल और रेयर है। डीप वर्क मेनली 4 तरीकों से किया जा सकता है, जो है मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस 21st सेंचुरी में अगर आपके पास बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी, तो बिल गेट्स और जेके रोलिंग की तरह आप भी वर्ल्ड क्लास वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ ये सभी बातें मैंने कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखी है, जो सच में जबरदस्त है। अगर आप डीप वर्क के बारे में थोड़ा और डीप में जानना चाहते हो, तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स रीड करने का टाइम ना हो, तो आप ऐसे बुक समरी वीडियोस देखते रहिए। वेट, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, देन कांग्रेचुलेशंस, आप YouTube पे वीडियो देखने वाले 99% लोगों से ज्यादा फोकस्ड है और आपके लिए डीप वर्क करना काफी आसान होने वाला है। इसी बात पर आपके लिए एक सीक्रेट कमेंट कोड है #above99, जिसे आप अपनी कमेंट के साथ लिखें, क्योंकि ये कोड सिर्फ उन लोगों को ही पता होगा जिसने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा होगा। धन्यवाद।